Okay, so I'll start again. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Uvajayanam, Namo Loe Savasahunam. जय जिनेन्द्र सभी को। हमने पिछले क्लास में कर दिया था पहला अध्याय तत्वार्थ मणि प्रदीप का, पर हम आज उसको क्विकली रिव्यू करेंगे। और नैगम नए जो लास्ट टॉपिक था वो हम अभी वापस रिव्यू करेंगे। तो पहले तो उसमें नैगम आदि 7 नए हैं, राइट? Give me a second. I'm trying to bring up the thing from WhatsApp, a little chart, so I can show you. Everybody, do you have your charts book in front of you? तो देखो, जो नैगम नए जो है उसको बहुत तरह से उसके विभाजन किए गए हैं। सो फर्स्ट इज कि नैगम में there is 2 types, right? द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए. So that is one. If you are able to try to draw yourself these charts. Okay, द्रव्यार्थी का मतलब होता है सामान्य ग्राही. That means it takes the overall picture, right? हम सब इंडियन हैं, वो सामान्य हो गया ना. Then when I talk about myself, I can go into more specific. So that will be पर्यायार्थिक नए. Okay, now one second. I'll first put okay. Okay, this is something Paryadik is, we are Indians, but I live in Gujarat. Yes. Hang on. I'm trying to show you guys a chart that I did not find in the version I had. But Rajesh sir sent this to me. Somehow my internet is a bit slow. Just one second. Okay. Hoping it'll come soon. Oh, please. Okay. So you guys, if you can, try to make a chart. ऊपर लिखो नए, then द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक. In द्रव्यार्थिक, the meaning is सामान्य ग्राही, or there is 2 other words that they used. Let's see. Sadrashya and one second here. These are mouthfuls. Sadrashya-stitva, Swarupa-stitva. So Sadrashya is more Samanta, like all Jeev, all Indians. And Swarupa-stitva is more detailed. Okay? So under Dravyarthik, you will write Samanya Grahi and Sadrashya. And then Paryayarthik is going to be Vishesh Grahi. It's going to talk about the specifics of things. Okay. Now, this is the chart that he sent me, which I did not find. Do you guys see this in the your book? We have it. It's on page 9. Okay. Prabhajis on page 9 of the book. I thought 1 second here. Yeah, it's not very clear, but just so you know. So it's this is 9. About the extent of what we are supposed to know, right? Because there are these 7 nae और उनका brief, okay? But I'll still show you the chart wise. Okay. अब ये द्रव्यायार्थिक और पर्यायार्थिक हमने 2 bifurcations कर दिए. द्रव्यायार्थिक के नीचे लिखोगे नैगम, संग्रह and व्यवहार, which is, are you guys, this is not very clear, but can you at least make out? Prabhaji, it's in our book. Okay. Page 9. Page 9.
How come I didn't find it when we were looking for it? Sorry, 19 19. 19. और ये वाला कौन से उसमें था? This one? That is on, oh, nahi. Because I found this one, because this was the one chart right before the second chapter. Okay, never mind. We'll look through this one. Okay. I don't see that one, the other one. No, the other one is right before दूसरा अध्याय. So that one I know for sure. I showed you guys from the PDF. So let's go through this one. Okay. So Okay. ये जो तीन है, नेगम, संग्रह और व्यवहार, ये तीनों आप लिखोगे द्रव्यार्थिक के नीचे, तीन बाइफर्केशंस. ओके. अब पर्यायार्थिक के नीचे you will have four bifurcations, which will be ऋजु सूत्र, शब्द, संबीडु and एवं भूत. मैम मैंने द्रव्यार्थिक के नीचे सामान्य लिखा है और सामान्य के नीचे ये तीन सामान्य is not a bifurcation, it's just a meaning of it. Okay, in parentheses you can write samanya grahi or sadrushya, like that. That is just explaining what will be included in it. Okay, got it. तो नैगम, संग्रह और व्यवहार ये तीनों आ जाएंगे द्रव्यार्थिक में. मींस दे आर, अगर आप द्रव्य पे दृष्टि डालोगे तो ये नए काम में आएंगे. पर्याय पे दृष्टि डालोगे तो ये ऋजु सूत्र, शब्द, संबीडु और एवं भूत. Now there is lot of other terminologies that also came about in this book. So I'm going to quickly, we'll of course discuss these these seven rather. पर एक और चीज, इसमें बहुत सारी they showed you so many other ways you can bifurcate. तो पहला जो नेगम है उसमें तो अपन को कोई क्वेश्चन नहीं था when we did it in class last time, right? कि भूत नेगम, वर्तमान नेगम and भावी नेगम. We understood that correctly, right? अब उसको भूत और भावी जो है, they called it असत because that is not presently true, right? भावी होगा, it's an imagination, और भूत हो चुका. ठीक है. उसी को उन्होंने ज्ञान नय भी कहा, उसी को संकल्प विकल्प भी कहा. They use so many terminologies, which is why we were getting confused in the last class. So I'm just clarifying all this so you can write it down so you don't get confused when you see these terminologies. So they all will be the same thing. उसको भूत और भावी जो नय है वो असत है, ज्ञान नय है, संकल्प विकल्प वाला है. So ma'am, ज्ञान नय can be a synonym of negam नय, right? नहीं, नेगम में भी जो भूत और भावी है वो ज्ञान नय है और जो वर्तमान है वो अर्थ नय है. Okay. बिकॉज वर्तमान में तो जैसे गाय का एग्जाम्पल लिया, राइट? सो गाय शब्द से तो कुछ नहीं आएगा, ज्ञान, शब्द और अर्थ, ये और तीन लैंग्वेजेस, तीन वर्ड्स इन्होंने यूज किए थे नेगम नय में. सो ज्ञान इज असत विच इज इमेजिनरी, संकल्प विकल्प. शब्द इज जस्ट द वर्ड गाय एंड अर्थ इज एक्चुअल गाय विच इज वर्तमान. And so I'm just Vartaman, going over all the different words they used, which made it very confusing for you guys to understand. Because when you read the book, there's too many terminologies that are filled in, और वो उनको connect करना मुश्किल हो रहा था. so इसलिए I'm Vartaman, going through this exercise. so Vartaman is also asat, no? No, वर्तमान is not असत ना. Presently गाय तो है, उसको आप देख रहे हो, वो अर्थ नय हो गया. ठीक है. So basically मैम यहाँ पे एक ही बात पे फोकस लाया जा रहा है कि आप है ना अर्थ ने पे फोकस कीजिए बिकॉज वही सत्य है. आई गेस सो दैट्स व्हाट रीचिंग. नहीं, पर देखो हम क्यों ये नए समझ रहे हैं, पहले बात तो उसको समझो आप. ओके. नए, ऑल ऑफ दिस इज यूज्ड इन व्यवहार. जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो बोलने वाला तो कैसे भी बोल सकता है. आई मीन, अब जैसे हमने वो चार किए थे ना, नाम, स्थापना, भाव, राइट. व्हाई डिड वी डू दैट? कि भगवान की मूर्ति तो वो की वो है, अब उसको हमें समझना है कि वो कैसे है. सेम वे कोई अगर आपको बोलेगा वो प्रेसिडेंट आ रहा है, और अगर आपको ये ज्ञान नहीं है कि भूत नेगम नय कोई चीज होती है,
तो आप उसको ब्लेम करोगे, हाउ कैन यू कॉल हिम प्रेसिडेंट, ही इज नॉट प्रेसिडेंट राइट नाउ। तो वो समझने के लिए हम ये सारे नए को समझ रहे हैं, ठीक है। वो तो प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल तो लौकिक है, पर किताबों में जब आएगा इस तरह का चीज तो हमें समझ आएगा कि वो गलत नहीं है, वो इस नए की अपेक्षा से बात हो रही है। ऑलराइट। अब जब भी किताबों में तीर्थंकर महावीर, राइट, ऑब्वियसली वी नो तीर्थंकर नहीं है अभी महावीर, अभी वो सिद्ध है, फिर भी किताबों में तीर्थंकर महावीर आएगा ऐसे। अब ओके, सो वो हो गया। नाउ अब ये जो ज्ञान नए, अर्थ नए और शब्द नए, ये 3 वर्ड्स आए थे उसमें। ओके, एंड लेट मी पॉइंट आउट द पेज नंबर सो यू कैन आल्सो पुट द रेफरेंस देयर। We already talked about Nishpan and all those things, right? Hopefully you have been writing notes. Okay. Yes. ये वाला है पेज 71 पे, नैगम नय आदि 7 नयों का विभाजन। So this is another way they are distributed. सेम 7 नए, पर उनको और एक तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन तो था द्रव्यार्थिक एंड पर्यायार्थिक, द्रव्यार्थिक में वो पहले 3, पर्यायार्थिक में वो लास्ट के 4, राइट। अब देयर इज अनदर वे दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट व्हिच इज ज्ञान नय, अर्थ नय एंड शब्द नय। ऑलराइट, सो ज्ञान नय में आ जाएगा ओनली नैगम नय। एक्चुअली नैगम नय विल कम इन बोथ ज्ञान नय एंड अर्थ नय, बिकॉज उसमें वो नैगम का जो भूत और भावी होगा वो ज्ञान नय होगा, और वर्तमान है वो अर्थ नय होगा। गॉट इट। अर्थ Yes. नय विल बी संग्रह, व्यवहार एंड रुजु सूत्र। You can again make a chart. You will have ज्ञान नय, अर्थ नय and शब्द नय. So under ज्ञान नय you will only get nagam. And tell me if I'm too fast for you or if you're not able to write. Under अर्थ नय you will have nagam, sangrah, vyavhar and ruju sutra. Negam, Sangra, Vyavhar, and okay. So only the vartaman part of nagam will come under अर्थ नय. Nagam, ma'am, can you please repeat the Earth Nay once? Would be अर्थ one, नय के 2, नीचे 3. आएगा वर्तमान नैगम नय, संग्रह, व्यवहार and रुजु सूत्र, those 4. Vyavahar, Negam, Sangraha, Ruju Sutra. Vyavhar, and Ruchi Sutra. And you can write the page number reference where it's talked about, 71, 72, okay? Now, the third one, Shabdanay. Under Shabdanay, you will have the last 3. I'm on the screen here. Shabd, Sambidu, and Evambhut. And Evambhut. So you got it? So now, so there's 2 ways they are divided. One is Gyan, Arth, and Shabd. The other is Dravyarthik and Paryarthik, which is shown in this picture also. Now, let's briefly understand them. Nagam we already understood properly. संग्रह भी हमने डिटेल में कर लिया था। संग्रह में सत्ता means existence. Mahasatta, I want you to write good notes because it will be much easier to understand from your notes than compared to reading the 25 pages in the book. Okay, so Sangra mein So Satta. संग्रह में सत्ता word is there. Satta means existence. पहली बात तो, right? Now Mahasatta means grouping. How did I explain that? Whole. And Avantar Satta is subset. So those were the 3 terminologies that came in Sangra. What was the last one, Prabhaji? Avantar Satta. Avantar. 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 So, ma'am, India is whole, that is Mahasatta. Jamnagar is Avantar Satta. Subset, Jamnagar right? would be like Avantar Satta for Gujarat. Gujarat will be Avantar Satta for India. Okay. Got it? So anything can be both depending on how you're looking at it. India is whole.
But if you look from the universe point of view, India is a subset. Yeah, it depends on your reference. And It Satta depends on the reference point. Yes. But both Maha and Avantar Satta is part of Satta. Yes, they are all part of Satta, existence. Got We it. all exist. Now, we may be subset of something, and there might be subsets from us, both ways. So, ma'am, यहाँ पे तो संग्रह means satta, and satta has two bifurcations, Mahasatta and Right. Avantar Satta, right? But ma'am, do we have any other specific names for Mahasatta and Avantar Satta, like sangrah? Sangrah is satta. So, do we have any other No, names? under Satta only there is two types, Mahasatta and Avantar. Okay, fine, got it. ठीक है ना? So अब देखो यहाँ इन्होंने क्या मीनिंग लिखा है, जाति के विरोध बिना समस्त पदार्थों को इकट्ठा ग्रहण करना is संग्रह, right? You're collecting. When you speak Yes. collectively, that is संग्रहण, right? तो वो सत है, everything is existing, and द्रव्य है. See, द्रव्य में it's a grouping of things, right? द्रव्य 6 होते हैं ना? Okay. अब व्यवहार में क्या है? विधि पूर्वक पदार्थों के भेद को ग्रहण करना. So व्यवहार is talking about the specification. जो सत है वह या तो द्रव्य है या गुण है. अब जो द्रव्य है वो या तो जीव है, जीव द्रव्य है, या अजीव द्रव्य है. So when you get into भेद प्रभेद, that is व्यवहार. So basically, vyavahar is something, yeah, we talk. व्यवहार is always भेद प्रभेद. Even when you talk about निश्चय and व्यवहार, व्यवहार whenever you talk about is whenever you do the भेद. जब भी भेद करोगे तो वो व्यवहार हो जाएगा. ठीक है? Okay. अब now, so we have finished now. Those three were under द्रव्यार्थिक न्याय. Yes. ठीक है? अब पर्यायार्थिक न्याय. Now we are only talking about the विशेष ग्राही, जो पर्याय से की दृष्टि से बात करता है. उसमें पहला है रुजु सूत्र. रुजु सूत्र के अंदर में 2 बाइफर्केशंस फिर से किए उन्होंने, स्थूल रुजु सूत्र एंड सूक्ष्म. अब स्थूल को उन्होंने they also gave another word called अशुद्ध, and सूक्ष्म का they gave another word called शुद्ध. So sorry, Prabhaji, say that again. So two types. Two bifurcations of रुजु सूत्र, स्थूल and सूक्ष्म. स्थूल means मोटा मोटी and सूक्ष्म means fine. Ma'am, can we say Pudgal is Thul and Atma is Sukshma? नहीं, यहाँ पर और तरीके से मैं समझाती हूँ. ओके? तो स्थूल is अशुद्ध and सूक्ष्म is शुद्ध. Now, यहाँ जो स्थूल बोल रहे हैं, that is अभी अपन सब मनुष्य पर्याय में. ठीक है? अब मनुष्य पर्याय कितनी बड़ी है? From birth to death. So it's taking a big span of time. So it's like a mota moti पर्याय, right? It's not like a big पर्याय. So that is स्थूल रुजु सूत्र पर्याय. Now, सूक्ष्म शुद्ध पर्याय is वो एक समय की, एक instance. See, एक समय is dividing a second into so many parts, which cannot be grasped by the human mind. ठीक है? हम जब तक मैं ये पेंसिल जैसे हिली, ठीक है, जब तक मैं ये ग्रास्प करूं, मेरा माइंड ग्रास्प करे, it's been so many समय after. But Sukshma Ruju Sutra is talking about that moment, exact moment when that paryay happened. वो जो एक समय की पर्याय, उसको सूक्ष्म या शुद्ध पर्याय बोलते हैं. अशुद्ध. शुद्ध एक समय वाली शुद्ध है. जो मनुष्य पर्याय जो बड़ी वाली बोली थी वो अशुद्ध है. Oh, so stool is अशुद्ध. Right. एक समय की पर्याय. So stool, can we write collection of समय की पर्यायs, many समय की पर्यायs? नहीं. हाँ, it can be a collection of पर्याय, because मनुष्य पर्याय आप बर्थ से डेथ ले रहे हो, पर उसके बीच में तो कितने समय निकल जाएंगे ना.
कितनी सारी पर्याय होंगी, पर वो सब एक कलेक्टिवली मनुष्य पर्याय में ले लिया हमने। So, So ma'am, this is a part of Paryayarthik यस, स्टिल इट इज names. ओवरऑल पार्ट ऑफ पर्यायार्थिक नय। यस, How does it तो make it विशेष विशेष? ग्राही ले रहा है। Okay. ठीक है, अब जो स्थूल अशुद्ध की जो बात है उसमें भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, but they all mean the same. So I want you to just write so you don't get confused. कि whenever you see these words, व्यंजन पर्याय, स्थूल पर्याय, समूह, द्रव्य, चार गति रूप, they all are going to be under स्थूल रुजु सूत्र. can you tell us those again, please, Prabhaji? Okay, व्यंजन, Vyanjan. स्थूल, Yeah. समूह, द्रव्य, चार गति रूप, तो ये सब जो भी वर्ड्स आएंगे दे आर ऑल डिस्क्राइबिंग दिस स्थूल रुजु सूत्र अशुद्ध. ठीक है, the So reason can I we want give you to note down all this is now when you go back and read those pages you won't be as confused. So there's synonyms in a sense for stool? Yes, in a sense only, not exactly, but yes, those terminologies will be used interchangeably. can we name them as different types of Sthul Ruju Sutra, ma'am? नहीं, टाइप्स नहीं कहेंगे No, types नहीं है, it's दूसरे दूसरे हाँ नाम दिए हैं stool के लिए. हाँ, Stool. जस्ट कि उसको कभी स्थूल कह देंगे, जैसे मैंने बताया ना, स्थूल अशुद्ध कह देंगे तो भी वही बात हो गई ऐसे. ठीक है, now so we understood the two parts of रुजु सूत्र, स्थूल एंड सूक्ष्म, और अशुद्ध एंड शुद्ध. ठीक है, we are done with रुजु सूत्र. Now let's come to शब्द. शब्द is, now let's take example of राजा. राजा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं. नृप, भूपति, what else is there, क्या बोलते हैं, शासन जो राज करता है उसको, whatever. So ये अगर आप राजा बोलो तो भी वही मतलब है, नृप बोलो तो भी वही मतलब है, भूपति बोलो तो भी वही मतलब है. तो वो शब्द नए से all of them would mean the same to you. So the same thing is basically stool में जो synonyms, जो similar names लिए थे, would that हाँ, be? somewhat, right. So that would be kind of like shabda, right? Kind of. The They're not same? exactly, they may all mean different things, but you're taking it as the same meaning. पर्यायवाची जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में. सो शब्द में आप ये कुछ भी बोल दो, इट्स पर्यायवाची. Whether you tell me राजा, you tell me नृप, you tell me भूपति, it all means the same in शब्द नय. तो मैम ये जो भी अलग अलग वर्ड्स अलग अलग जगह पे हम अगर पढ़ेंगे तो वो सबका एक ही मीनिंग आएगा? डिपेंड्स, वही मैं कह रही हूँ. जनरली लोक व्यवहार में जब आप राजा बोलते हो तो यू आर कॉलिंग हिम राजा. So you'll get it more clear. Let me come now to the संभीरु नय. ठीक है, अब संभीरु नय में when you say the word राजा, it should mean, when I say the word राजा, it should mean to me only when he is doing शासन. क्योंकि राजा किसको कहते हैं? जो शासन कर रहा है वो राजा. So currently महावीर करंट, भगवान अभी यहाँ करंट की बात नहीं है, जस्ट जनरली वर्ड की बात है कि संभीरु में when you use the word राजा, it has a meaning. It's not पर्यायवाची to नृप और भूपति. Whereas in शब्द नय, whether you called him राजा, you called him नृप, it didn't matter. In संभीरु it matters. कि नृप बोलोगे तो यू आर मीनिंग कि ही इज क्या बोलते हैं, लोगों का हेड. ओके, But you can say Raja is only जब भी वो court, वो I don't know what the let me get to this now. Listen out. So in Sambhidu, all you're trying to say is
that Raja, Nrupapati, Bhupati, they are not paryayavachi. They mean something to me. They mean different things to me. Got it? That's all you're saying in Sambiru. Ma'am, I'm not getting it. I know it's very confusing, but there is a difference. That's why I'm telling you. Now in Evam Bhut is the last one where we will call him Raja only when he's sitting on the throne and ruling. I see. Evam Bhut is even further sukshma. It's more further detail. So in Evam Bhut is where we are all talking about कि जो जैसा काम उस time कर रहा है, उसको उस time वैसा बोलो. कि only when he's on the throne he's going to be called Raja. When he's जब भूमि की रखवाली कर रहा है, means he's protecting the land, then you call him Bhupati. So like that. तो मैम यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे मैं ये समझ रही हूँ, इट इज लाइक दे आर मेकिंग स्पेसिफिकेशन ओनली, जैसे कि अभी एनिमल्स है, पशु है, दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट द पशु, बट देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पशु, जैसे गाय भी है, दूसरे अलग अलग भी है, बट दे आर टॉकिंग इन जनरल अबाउट द एनिमल. तो इज इट लाइक दैट? यस यस. अब आप पशु बोल सकते हो, पर पशु से कितना लिमिटेड समझ में आएगा आपको. So Whereas that will be एवं भूत Sambiru में आपको Vinay. एग्जैक्टली कहना पड़ेगा कि So ये that गाय है कि घोड़ा है कि क्या है. so that would be तो जो प्रिया जी ने एग्जांपल दिया वो शब्द नहीं होगा. And then when we say के I don't know parrot है. नहीं. No. शब्द नए will be whether I call it. It's kind of difficult to come up with examples. That's why there are limited examples. Like in Raja's case, all those three words can be used interchangeably in शब्द नए. पर्यायवाची है. ऐसे ही पशु का कोई और पर्यायवाची शब्द अगर आप सोच सकते हो तो that will be शब्द नए. Versus some So you could say, right? I mean, a parrot, a crow, a sparrow, they're all. Like that will be evam bhut because That you're would being be evam bhut. specific. That will be evam bhut. So I know they're very confusing. If you want, we can quickly read those because that's only 3 pages. Let's see here. Okay. Okay, Shabd Nay is quickly because there's only 2 paragraphs. I'll quickly देखो, in this Shabd Nay is on page 84. I'll read the second paragraph. जिस प्रकार भिन्न स्वभावी पदार्थ भिन्न ही होते हैं, उनमें किसी प्रकार की भेद नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार भिन्न लिंग आदि वाले शब्द भी भिन्न ही होते हैं, होने चाहिए. उनमें किसी प्रकार की भी एकार्थता घटित नहीं होती. और इस प्रकार दार, भार्या, कलत्र ये भिन्न लिंग वाले 3 शब्द अथवा नक्षत्र, पुनर्वसु, शतभिक्षक ये भिन्न संख्यावाचक 3 शब्द और इसी प्रकार अन्य भी भिन्न स्वभाववाची शब्द भले ही व्यवहार में या लौकिक व्याकरण में एकार्थवाची समझे जाएं, परंतु शब्द नए इनको भिन्न अर्थ का वाचक समझता है. I don't know if that really clarifies. Total bounce. I know, that's why I'm just giving you the gist of everything because you are not required to read and understand all of this. Because this is more for advanced, okay? So, इसीलिए I am trying to avoid reading because it will only confuse you more. But if you understand the gist of what I'm trying to explain to you, कि शब्द नए में you can use similar meaning, not exact same meaning, similar meaning. जैसे राजा भी बोल सकते हो आप, नृप भी बोल सकते हो, भूपति भी बोल सकते हो. अब पशु के केस में कैसे उसको बिठाएंगे, I don't know. पशु बोल दो, but even though animal and pashu pretty much mean the same thing. But if there were other paryayavachi shabd that mean similar, you cannot use any of those words, right? अब इसमें जो examples दिए हैं, the reason I don't want to get into those is because इनके original word के आप लोगों को meaning नहीं पता है. So then it's only going to confuse you more. It's not worth it. Okay, so Sambirud will be when now in that same. Sambiru will be, देखो अब देखो इसमें दिया है, संबीरु में एग्जाम्पल दिया है इंद्र, शक्र, पुरंदर. Okay, these are 3 words for Indra. Now the word Indra means
Just like I gave you Raja, Nrupa, and Bhupati, Indra means Aishwarya, Shakra means Samarthya, and Purandar means पुर को भेदन करने की क्रिया की ओर संकेत करता है. Okay. I don't know what any of You those mean. don't need to know what it means or what doesn't really matter. You are only trying to understand the Nay. That's why I came up with the simple example of Raja, because that's more easy to understand. You can relate to it. Okay. So in the Raja example, Sambhirudh में क्या होता है? Sambhidu में, when you use the three different words, they're supposed to mean three different things. When you say Raja, it means abhi शासन करने वाला. When you say Nrup, it means लोगों का boss or whatever, head of the public. Okay. When you say Bhupati, you mean protector of the land. Okay. So they all have different meanings. That's all the Sambhidu means. Now, Evam Bhut is the one they say, you call him Raja only when he's sitting on the throne and he's ruling. Got it. You call him Nrup only when he's currently head of all his people. Or you call him Bhupati only when he's in the process of protecting the land. So, ma'am, somewhere Evam Bhut name is more specific of Sambhirudh name. Right. They keep getting more detailed and more specific. So Evam Bhut is the most specific. Got it, ma'am. Finally got it. Sambhirudh says कि ये तीन type के राजा है. They're slightly different. Type नहीं है. Raja can be called Nrup or he can also be called Bhupati. There are different names. जैसे भगवान के 1008 नाम नहीं बना लेते हैं depending on उनकी विशेषताएं. But they all mean the same thing. You're pointing still to the same person. It's like, ma'am, if I'm not mistaken, please do correct me. You call king knight, but actually knight means a warrior. You can call him nobleman but also. It's okay. It's not wrong to call him a knight. Yes. But when you're talking about Evam Bhut, you are specifically saying that knight means a warrior, and at that point, so he is not a warrior right now. So currently, yes. अगर आपके साथ वो mingle करके बैठा हुआ है, he cannot be called a knight at that time. From Evam. Okay, so you could say that a prince, a king, or whatever is a nobleman or a knight or whatever. And तो शब्द में what is तो it? शब्द नए में तो उसको knight बोल दो, राजा बोल दो, king बोल दो. Doesn't matter. Don't care. It's the same. Doesn't matter. That's all they and care. Sambhirudh में these are the Sambhiru they're saying ki yes, you can call him whatever you want, but they all mean different things. Got it. Got it, ma'am. Quite. Got it. Questions कैसे पूछेंगे ये एग्जाम में? कैसे नहीं पूछेंगे. That's what I'm saying. In exam, you only need to know मोटा मोटा. कि you know, अब now you got it. तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि most likely questions will be like, is this जो हम रूटीन में सोचते हैं भगवान को ये महावीर भगवान भूत निगम नय से है कि भाभी से, उस तरह का कुछ आएगा. Not much. But if you understood what I explained today, you'll get yes, any ma'am. correct. Yeah. No, quite clear. Very much clear. तो मैम इसको ऐसा है कि मतलब शब्द नए फिर समभी रूढ़ी मतलब more and more It they are gets going more and more specific. शब्द में आप कुछ भी बोल दो, उसको राजा बोल दो, नाइट बोल दो, भूपति बोल दो, नृप बोल दो, they don't care. It's fine. Now, एवं भूत में भी, sorry, संभीडु में भी कुछ भी बोल दो, not a problem. But you should know कि राजा का मतलब शासक है, भूपति का मतलब प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड है, नृप का मतलब हेड ऑफ पीपल है, ऐसे. मैम कैन आई ट्राई वन एग्जांपल इन दिस? ओके. जैसे अभी पंचेंद्रिय जीव, दैट विल बी शब्द. पंचेंद्रिय कैन बी एनीथिंग, सो मेनी. ठीक है. देन समभी रूढ़ी में वी कैन टेक ओनली वन, जैसे कि गाय एक पंचेंद्रिय है.
ठीक है. नाउ द फोर्थ वन एवं भूति. हम गाय उसे तभी कह सकते हैं जब वो चल फिर रही है. जब वो बैठी है तब नहीं है वो गाय. यस, इट मीन्स क्योंकि इट इज गो वर्ड का मतलब होता है Oh, घूमना. So सॉरी. go word means घूमना. So if you call it go and she's sitting, then it's wrong according to Evam Bhutna. but the example is not No, absolutely correct. your example is not completely correct, because Panchendriya and go, they don't mean the same thing Meaning, well, I yeah, mean, they they're can, part, they're because part. because go is But also Panchendriya no, G, right? but for example, But I it's still a think, part of it. They're but if not the same thing. Whereas Raja, Bhupati, and Drupati is the pointing to the same person. Okay. Okay, ma'am. Just one. Okay, I've come up with this example again. Mhm. Let's say students. Okay, students is Shabd Nay. Okay. Mhm. Now girls and boys is Sambirud Nay. Now Dolly is a girl, is a student, is an Evam Bhut Nay. Is that correct? Or again, it's a confusion. No, because no, see, girls no, and boys are pointing to different people, they're pointing to totally not the different same things. person. Okay. So you have to find words that point to the same person, though. Like I think आपका डॉली जी आपका जो एग्जाम्पल था ना कि प्रिंस है, प्रिंस नोबलमैन हो सकता है या नाइट It हो has to be सकता the है. same. That was a perfect example. I guess maybe it's the same as saying हम जो है हम वाइफ है, हम मदर है, हम डॉटर है, right? But So if you just say that Rupal, would be Sambirud Nay. She's हाँ, a वो mother संबीरूढ़ daughter, होगा कि right? आप correct, उसको वाइफ but कह दो, डॉटर कह दो, you ये could तीनों still में से call कुछ her भी a कह दो, woman. you're still pointing at the same person. But you Yes. can still call her a woman, which would be the Shabda thing, right? As a Whereas woman. Evam Bhut में only the kid will call her mom. Correct. Only the brother will call her sister. Correct. And current Right. Paryay, she's a student, so That's she's a better student. example. Perfect. Okay, cool. Yeah, and all of them can be called women, right? So whether they're a Yes, mother, they can all be called wife, women. Yeah. you call them women, but if you call a That's mother, not still a wrong. You're woman. still pointing at the same person. Yeah, daughter is still a woman, a wife is Yeah. still a woman, right? So Yes. that becomes Yes. Sambirud. And Yes. then Avam, Avam, Evam Bhut is, Evam is hi mom, yeah. hi wife, right? Oh, yeah. मैम ये बहुत रिवाइज करना पड़ेगा वरना सब भूल जाएंगे. इसीलिए I'm forcing you guys to write. Thank you. So This no is matter so how many helpful, times I Prabhajis. repeat, you guys won't get it unless you write yourself. तो ये एवं भूत में they are talking about a particular character. Correct. Doing a हाँ. particular job. At that time, At you that are time, only a kuch mom kar to your rahe hain. kid. You are not a mom to your husband. Correct. Current Paryay. Current Be Paryay. at that particular point. Yeah. मैम बहुत सूक्ष्म बात हो गई. ये कहाँ पे जा रहा है सब? ये बहुत कंफ्यूजिंग है और उसमें भी I इतने know. तरह से उसको डिवाइड, वो उसमें भी ये फिट होता है उसमें, इसीलिए आई मेड इट लाइक अ चार्ट Thank you. first for myself and then explain to you and told you to write, so that way we don't have to explain again and again. Okay, This is very helpful. Definitely, ma'am. Thank you so much. okay, now we'll come to 5th chapter and इसमें हमें limited चीजें करनी है, even though they're kind of connected. They've given us only certain ones to do. So pehla, let me bring up okay, I'll tell you the page number. Now we are coming to 5th adhyaya. Okay, that is what we are doing next. Okay, if you go to the DP of our group, it will tell you the different ones we are going to do from 5th chapter. So first, so we are supposed to cover Sutra. You can write down in your notes too, so we don't get confused. So wait, this is 21, chapter where? Sorry, chapter 5th where? chapter. 5th. The syllabus only covers Sutra numbers 21. I know, sorry, Prabhaji, wait 1 minute. Okay. So chapter. So this is chapter 5. Yeah. Sutra number 21.
which is, let's see here. I'm going to give you the page numbers also, so that way you know what all to cover. This will be page number 212, I think. So 212. ma'am, 212 mein there is a group of 5 sutras, 17 to 21, and we are only supposed to be concerned with the last one. My goodness. so So ये page 212 pe, Parasparo, page 212, sutra number 21. where it doesn't quite give you the numbers, does it? It does, on the right side. Read the one that says Parasparo Oh, correct. Pagraho 18, Jivana. ठीक है? Sutra 21, page 212. Okay. Okay, so that is the one. Then it is page 29 to 32 is what I will. Sutras 29 to 32. And those will be from page number 225, 26, and 27. 225, 222 to 28. Those 4 pages. Page 2 to 229 to page, no, what did I say here no, again? 225, yeah, right? 225 225 to to 229. 228. Ma'am, you said 228. Okay, then that's it, 228. 225, 222. 8. Yep. And then you are going to do sutra number 38, which is page number, oh boy, where's the page number on this one? Okay, 234. Then we'll skip a page and then we are supposed to do 236 and 37. Page 234 and then Why are 230. we skipping 235, ma'am? Um, Kalpaya. there must be some rhyme or reason why they don't want it in the syllabus. Okay, and Because then we- 236 and 237. So that's Sutra 41 and 42. That's correct. Okay. And since I have not written it down, you guys will tell me the page numbers. Yeah. Okay. So, I'll put it in the thing. perfect. Okay, now, so we'll start with page 212 right now. We'll quickly, we only have 8 more minutes. So we'll at least try to do this one. Okay. 236. Oh, that's it. Okay, cool. Okay. Yeah, they're simple one-pagers. So I'll quickly, briefly explain this Parasparo Pagroho Jivana. This is an important one. So This page is, if you 212. notice on the Jain symbol, वो जो akimbo का symbol होता है ना, आदमी ऐसे खड़ा हुआ है वाला, उसमें भी नीचे they write this line, and it's sort of very misinterpreted. So now, when they say Paraspar Upgraho Jivana, it is usually misunderstood as that everybody helps each other. Okay? It is inaccurate because basically what it means, because right, we already learned the principle, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, तो करता तो हम हो नहीं सकते किसी के. पर now go down, if you have the book open, go down to the bold, last part of the bold, which says लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता में परस्पर में निमित्त होना, यह जीवों का परस्पर उपकार है. Sorry, कहाँ पे? Oh, on the बोल्ड next में page? last 2 lines देख लो. Ma'am, page number? 212. What? There's nothing in dark. Should Sorry, be sorry, वापस. Sorry, I'm so sorry. bold, I mean जो bold है ना, Bold. लौकिक अनुकूलता, हाँ. वो वाला. So basically वो क्या बोल रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, एक पर्याय दूसरे पर्याय का कुछ नहीं कर सकती, पर हम as we exist लौकिक में, पुद्गल जीव में निमित्त बन सकता है, जीव पुद्गल के चीजों में निमित्त बन सकता है.
तो हम एक दूसरे के चीजों में निमित्त बन सकते हैं, उतना ही उपकार है। मैम क्या ऐसे बोल सकते हैं हम एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं? यस, ऑफ कोर्स। पर देखो, अब फॉर मी टू स्टैंड हियर, अधर्म द्रव्य निमित्त है ना रोकने के लिए। फॉर मी टू वॉक, धर्म द्रव्य धर्म निमित्त है। तो निमित्त पने की अपेक्षा हमें एक दूसरे का उपकार है, बस उतना ही। एंड इट अप्लाइज टू बोथ favorable circumstances as well as unfavorable circumstances. योर उपकार मीन्स निमित्त अगेन। Right. See, normally हम क्या सोचते हैं, उपकार है मतलब तूने मेरे ऊपर उपकार कर दिया, तूने मेरा कुछ कर दिया। ऐसा मीनिंग नहीं है वहां पे। इतना ही कि हम, हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो दूसरे द्रव्य उसमें निमित्त हो सकते हैं। They exist. So Okay, so good they are or present bad at the time. is Yes. upkar. Good or सो bad. यू टू से मैम कि अगर कोई भी इंसान कनेक्टेड है एक दूसरे से, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ निमित्त, चाहे वो अच्छे रूप में Right. हो It's या always only a निमित्त नैमित्तिक संबंध. Right. ठीक है। अभी सो बेसिकली रिएक्ट करने की बदले सिर्फ वो है उतना ही जानना है, दैट्स इट। सो अब देखो, इसको थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शरीर पौद्गलिक है और शरीर का संयोग जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है। ठीक है ना? जीव Page अभी कहाँ है? 230. शरीर में है। शरीर तो हमारे लिए जेल है, बंधन है। इवन दो वी मे थिंक इट इज अनुकूल, बट इट इज एक्चुअली प्रतिकूल। इट्स होल्डिंग अस डाउन। कारमान शरीर तो बंधन है ही, औदारिक आदि शरीर भी बंधन है। ठीक है, क्योंकि पाप पुण्य मिल दोनों बेड़ी है। दे आर बोथ होल्डिंग अस। अब पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों कर्मों में मेरे पैरों में बेड़ियां डालकर मुझे शरीर रूपी जेल में कैद कर भारी दुख दिए हैं। सो नाउ देयर सेइंग कि वो दुख देने वाले कौन है? यहाँ ये कहा गया है कि पाप के उदय से प्राप्त होने वाले प्रतिकूल तन वचन या का संयोग और पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले अनुकूल तन वचन का संयोग दोनों बेड़ियां हैं। तन को कारागृह जेल ही है। ये सभी पुद्गल द्रव्य के जीव के प्रति उपकार है। सो उपकार इज नॉट इन द सेंस ऑफ फेवर एनीमोर हियर. So make sure you understand that clear, even though the word says parasparo. So यहाँ अकेले भलाई की बात नहीं है, भलाई बुराई दोनों। सो सपोज तुम बोलो कि अरे मनुष्य जन्म तो अच्छी चीज है, तो ये तो उपकार ही हुआ ना मेरे लिए, कर्मों ने मेरे ऊपर उपकार किया कि मुझे कम से कम मनुष्य दे दिया। पर वही कर्म आपको नरक में भी तो ले जाते हैं। ठीक है, तो उपकारक मीन्स the way to understand this word upkar in this context is president, vice president को हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो कार्य कोई कर रहा है, ये सहायक है। Do you understand the difference? Yes, yes. So this upkar word is supposed to mean sahayak. Okay? So basically कार्य आत्मा कर रहा है, सहायक पुद्गल है। हाँ, ये साथ साथ चल रहे हैं। जब आत्मा मनुष्य पर्याय में हुआ तो उसके मनुष्य आयु कर्म या गति कर्म का उदय चला साथ साथ में। So say that again, Dolly ji. What you said was very nice. आत्मा is the
आत्मा करने वाला है और सहायक है पुद्गल, दैट इज आवर बॉडी। आत्मा करने वाला है और सहायक। मैम ये हम लोगों ने निमित्त उपादान में भी सीखा था ना, एक उपादान हाँ, जो आत्मा अभी में होता है चलो और ये एक। सब तो अपन एक दूसरे का उपकार तो फिर भी समझ जाते हैं, मनुष्य जन्म वगैरह। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट। अभी मुझे तो धर्म द्रव्य चला रहा है, ऐसा कभी आपने सोचा है? नहीं। आई एम वॉकिंग, धर्म द्रव्य जस्ट एग्जिस्ट। आई एम स्टॉपिंग, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य इज जस्ट एग्जिस्ट, इट्स निमित्त। तो उतना ही तुलिका उसका जी आप कुछ बोल उपकार रही है। थी। हम्म। तुलिका जी वाज ट्राइंग टू से समथिंग। हाँ बोलिए तुलिका। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ आई। रही। हाँ। अब आई। ओके। ओके। नहीं, मैं बीच में एक दो बार बोला बट आई थिंक सो वो मैम ने बाद में कवर ही कर लिया, तो बोलने की जरूरत नहीं है। ओके नहीं ठीक नहीं, है, कोई वी नहीं। कुडंट हियर यू। तुलिका जी आपकी सॉरी। आवाज हाँ, नहीं आ कभी रही। कभी अगर आवाज नहीं आए ना तो आप वो रेज हैंड का वो कर दिया करो, तो दैट वे वी यस। विल नो कि आप कुछ पूछ रहे हो। ठीक है। सो अब हमारे लिए तो संबंधित सभी परजीव चेतन परिग्रह हैं। और अभी सपोज, राइट, हम एक दूसरे के लिए भी चाहे जीव द्रव्य हैं, फिर भी वी डोंट कैनॉट डू एनीथिंग फॉर ईच अदर। हमारा उपकार हो सकता है कि कोई निमित्त बन सकता है मेरे खराब सर्कमस्टेंसेस में या अच्छे सर्कमस्टेंसेस में। तो इसलिए इन द पॉइंट टू नोट हियर इज कि इसलिए परिग्रह रूप इन पदार्थों के प्रति एकत्व, ममत्व एवं राग द्वेष को त्यागने योग्य कहा है। डोंट वेस्ट क्योंकि योर टाइम बेसिकली। Are you reading it from somewhere? यस, इट्स ऑन पेज 220, wait, 216, 216, 1 2 3 4, फिफ्थ पैराग्राफ। अरे भाई हमारे लिए, just those 3 lines underline. And then also underline the word another. अरे भाई, यहां तो मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराना क्या प्रयोजन है, करने कराने का नहीं। Got it. Okay, so we are out of time. We can cover the rest of the chapter 5 in next class. So next सूत्र है द्रव्य का लक्षण। So last page Is that we have covered 29. is हाँ, last page which we have covered राइट। is चलो हमारे पास 1 2 मिनट, क्योंकि हम बिकॉज वी एंड अप गेटिंग कपल मिनट्स हियर एंड देयर लेट व्हेन वी स्टार्ट द क्लास, सो जस्ट टू कंप्लीट द आवर आई विल कवर दिस वन मोर, 29th आल्सो। ठीक है। Page 29. Okay. राइट, ये वाला एक है सत द्रव्य लक्षणम। Prabhaji, फिर 1 minute. 30th इज उत्पाद द्रव्य द्रव्यस, व्हिच इज यू गाइस ऑलरेडी नो दैट जो सत्य है, जो एग्जिस्टिंग है वो द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण सत्य है, जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है वह सत्य है। सो ट्रूथ इज एवर चेंजिंग येट कांस्टेंट। तो उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त सत्य ही द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार द्रव्य लक्ष्य है और उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त सत्य द्रव्य का लक्षण है। Utpad is the beginning, Vyay is the ending, and Dravya, ma'am, what is the meaning of Dravya? कंसिस्टेंट, कांस्टेंट। So beginning with tatparya यह है बिगिनिंग नहीं है, क्रिएशन, क्या उसको बोलते हैं, व्यय मीन्स डिस्ट्रक्शन, एंड मेंटेनेंस, कांस्टेंट। सी द्रव्य इज ऑलवेज कांस्टेंट, और उसकी पर्याय का उत्पाद होता है और नाश होता है। sorry, Yes. what was dravya? Maintenance. उसको एग्जाम्पल से समझाया है। कोयला जलकर राख हो गया, उसमें कोयले रूप पर्याय का व्यय हुआ, राख रूप का उत्पन्न हो गया, उत्पाद हो गया,
और कोयला तो कोयला द्रव्य कोल ही रहा। सेम वे सोने का एग्जाम्पल दे सकते हो। अंगूठी तोड़ के हमने छोटी सी चेन बना ली, बिछिया बना ली, तो अंगूठी का व्यय, बिछिया का उत्पाद, और सोना सोना ही रहा। सो ये हमने और कहाँ पढ़ा है? इट्स which सामान्य गुण does it relate to? सामान्य गुण। God. सामान्य गुण बोल जाओ कोई। Oh, I'll start for you. अस्तित्व, okay. सामान्य अस्तित्व, वस्तुत्व, अस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व. So which one is it out of just these four that I just said? I think अस्तित्व it's मैम। अस्तित्व। अस्तित्व, मतलब it's not leaving its actual content. सामान्य गुण अस्तित्व। नो मैम। द्रव्यत्व, ओके। द्रव्य का Oh, स्वरूप ही बदलना है, दैट इज द द्रव्यत्व गुण। ओके, और यहां लिखा भी है द्रव्य का लक्षण ही उत्पाद व्यय द्रव्य है। ठीक है, सो कभी नहीं बदलना वो उसका द्रव्य स्वभाव है, और बदलते रहना वो उसका पर्याय स्वभाव है। तो इसीलिए वी हैड द द्रव्यार्थिक नय एंड पर्यायार्थिक नय। ठीक है, ओके। चलो फिर हम कल करेंगे नित्यता का लक्षण, अर्पित और अनार्पित। और या so we we can finished Sutra 29 and yes, we finished Sutra 30. up to Sutra 30, 29 Yeah. to 32. So we have to do 29, 30, 31. We have to do, yeah. Got it. Okay. So today we covered those pages. अब आप देख लो, ये वाला पेज नंबर था 225 था, और 21 का पेज नंबर, did anybody make a note of it? Page 212 and 213. I'll write it and put it down. Okay. I'll put Cool. it in our group. Okay. And I hope to finish the 5th chapter tomorrow. Yeah. Okay. This was a great class. And put it in the note social that the students who couldn't come today should listen to today's Yeah. before they come, Yeah. so that they're not confused. Definitely. नहीं. Okay. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत